assignment M3, the subjective questions. Right? I have drawn the diagram. So we shall continue from the first question. Right? Now students, the question 1 we have done. We were doing the second question, that is sky sail. Right? So we have drawn the figure yesterday. This figure we have drawn, right? Right, students? So we have drawn this figure of the balloon. This angle is theta. Right. So first question is, in the given figure, if sin theta is equal to cos of 3 theta minus 30, and both theta and 3 theta minus 30 are acute angles, find the value of theta. Have we done this question, students? Yes, sir. We have replaced this sin theta by cos 90 minus theta. We have done this question already yesterday. So we were supposed to solve this. So यहाँ से आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? 90 minus theta is equal to 3 theta minus 30 degree. Right? So please find the value of theta. What is the value of theta now? हाँ जी बेटा, ये 10E के अंदर जो एकदम स्क्रीन में सबसे ऊपर जो बच्चा आ रहा है, प्लीज स्टैंड अप बोथ ऑफ यू. हाँ जी, हाँ जी, आप भी और आपके पीछे वाला स्टूडेंट. यस, प्लीज स्टैंड अप. हाँ, आपको भी बोल रहा हूँ बेटा, आप कैमरे में आगे चले गए ना, जो अपना फेस आपने. हाँ जी, प्लीज स्टैंड अप. आप बैठ जाइए बेटा, साथ वाले बच्चे, आपके पीछे वाला बच्चा जिसने फेस पे हाथ रखा हुआ है. हाँ जी, हाँ जी. Why you are not doing, beta? Please tell me why you are not doing questions. Have you solved this? Any teacher present in this class? Sir, yes, done. Have you done this question? Yes. Any teacher is present in this class? Yes, sir, he has done. Okay, and this second one, ma'am? He is doing, sir. Okay, ma'am, he was sitting idle. That's why I have pointed out. Okay, sir. Please sit down. क्या वैल्यू आई है बेटा, आप बताइए जरा एक मिनट थीटा की. जिस बच्चे ने कर लिया, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. 30 degree. 30 डिग्री. प्लीज सिट डाउन. राइट बच्चों, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, सो टेक 30 ऑन द left side and theta on the right side. So this becomes 120 degree equal to 4 theta, and theta will be equal to 120 by 4, that is 30 degree. Right ji? Everyone is clear? Next question is, what should be the length of the rope of the kite sail in order to pull the ship at an angle theta calculated above and be at a vertical height of 200 meter. Now what you have to do, you have to find the length of this rope. This is the rope. You have to find this rope, that is AC, and it is given that the vertical height is 200 meter, and this theta we have got is, so you have to find the hypotenuse. Perpendicular is given to you.
Please apply sin theta and tell me what is the value of AC. AC is equal to 400 meters. 400 meter आ गया बच्चों. So in triangle ABC, sin 30 degree is equal to AB upon AC. Value of sin 30 is 1/2. 1/2. AB is, so cross multiply किया बच्चों. So AC comes out to be 400 meter. Right? Third part is, अच्छा, they have only two parts. Is this clear? Both the questions? Yes, Any sir. doubt to any students in 10C? ये क्या बात 10C का वीडियो क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है जी? Sir, what is the issue? Video, very good morning, sir. What is the issue, sir? Yes, sir. Camera issue problem. Okay. So we move on to the next question, students. Third question. The top of two towers of height X and Y standing on the ground. Now there are two towers. One has height X, another has Y. Standing on the ground, subtends the angles of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the joining. Means ये जो center है ना, one tower is subtending an angle of 30 degree, another is subtending the angle of 60 degree. Now you tell me, looking at the figure, now this distance is same. These both are, if this is A, this is also A. Right? Now tell me बच्चे, which one will be 60 degree? 60 degree वाला higher होगा या smaller होगा? Right, students, बताइए जरा. Who will tell me whether this angle will be 60 degree or this 60 degree? Now what he has said, X makes an angle of 30 degree. So X will be smaller or greater? Who will answer this question? Anyone? Any from all the sections who would like to answer this question? Tell me whether X will be shorter or greater. Student, हाँ जी बताइए, किसी की आवाज आई है मुझे, बोलिए बोलिए. Sir, X will be shorter 30 degree. Why? Sir, because it is shorter and if the height of the building is long, so the angle will be large. वेरी गुड बेटा, देखिए जरा, वेरी गुड. एक एग्जांपल से समझते हैं. Let's say this is a point. This is the angle 30 degree. Now 60 degrees angle is greater. So which one is greater? ये 30 वाला आ गया बेटा. This is X, so this will be. So Y will be greater one. Have you understood this thing? Is this clear or not, बच्चे? If the angle will be greater, then the height will be greater. Got it or not? So therefore, this angle will be. Now what you have to find? You have to find the ratio of X to the Y. Please do this. Find the ratio of X to the Y. How you can find out the ratio? Which concept you will apply here? Yes, tell me. Anji, students, yeah, please tell me. आवाज क्लियर नहीं है बेटा आपकी. 10. Very good.
अप्लाई कीजिए बोथ द ट्रायंगल्स में tan. Let's say this is A, B, C, and this is O, right? So apply the concept of tan theta in both the triangle as perpendicular and base are given. So these two are both equal. So O is the midpoint of BC. हाँ जी बच्चों, बेटा देखिए दोनों ट्रायंगल्स में आपने क्या करना है, tan लगाना है. फर्स्ट ट्रायंगल tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y by a. So from here the value of y will be root 3a. Is this clear? Similarly, in triangle DCO, tan 30 degree will be equal to, so this comes out to be 1 by root 3. So from here the value of x comes out to be a upon root 3. Is it clear? Now what you have to find the ratio of x to the y. So take x upon y. The value of x is a by root 3 and value of y is, इसको simplify किया बच्चों. So what it comes out to be, so a will be cancelled out, it comes out to be 1 by 3. Is it clear? Any doubt, students? Beta, am I audible? Yes, sir. Nobody is responding whether you have understood this question or not. बच्चे आप रिप्लाई तो करो ना कि आ गया समझ, नहीं आया सर एक्सप्लेन कर दो दोबारा. बट आप लोग तो एकदम से, क्या हुआ, क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है? बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन था अगर आप डायग्राम बना लेते हो प्रॉपरली. सो क्वेश्चन इज जस्ट केक वॉक. कोई जरूरत ही नहीं है कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ करने की. जस्ट सिंपल दो ट्रायंगल्स में हमने tan का कॉन्सेप्ट लगाया है और उसके बाद उसको रेशियो फाइंड आउट कीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. हाँ जी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई building as observed from the top of a tower. Now see, this is a 50-meter high building and this is a tower, right? Now can you tell me how I come to know whether the tower is greater than the building? Yes. Can't the tower be greater than the building? Sorry, smaller than the building? कैसे हमें पता चला पहली लाइन रीड करके कि this is tower is bigger? Who will tell me? आपको फर्स्ट लाइन में Angle of depression given है. angle of depression given है. Very good बच्चों. Now since the angle of depression is given, that means from top of the tower when you are drawing the angle of depression means this angle is given. Angle of depression of the top and bottom of a 50-meter high building as, यहाँ पे बेटा बिल्डिंग वर्ड इंट्रोड्यूस कर दो हाई के बाद.
as observed from the top of a tower are 30 degree and 60 degree. Means angle of depression for top is 30 degree and for bottom is 60 degree, right? Respectively. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. So we have to find two things. One is the height of the tower, another is the distance between the tower and the building. Let's say this is x. Now what you will do, draw a line parallel to, let's say the building is AB, tower is CD, and this point is E. So you have to apply the concept of trigonometry in two triangles, that is CEA and CDB. Now tell me what will be this angle? 30. 30 degree. And this will be 60 degree, right? So we have applied the concept of alternate angles, right? So now we have got two triangles. If this is 50, then the will also be 50. Is this clear? So total height of the tower is h. Then the length of CE will be, what is CE? Minus 50. So what we have taken, let CD is h, dB is h, right? Therefore, CE will be equal to h minus 50 meters. Now we will apply the concept of trigonometry, right? In triangle CEA, tan 30 degree will be, what will be tan 30 degree here? CE over value of tan 30 is 1 by root 3 and CE is h minus 50 upon. Is this clear बच्चों? Anything not clear? इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यू गॉट x इक्वल टू रूट 3 इंटू h माइनस 50. राइट स्टूडेंट्स? एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? No, sir. राइट. सो सेकंड आ जाते हैं हम ट्रायंगल सी डी बी में. तो यहाँ पे tan 60 विल बी इक्वल टू h अपॉन x. In triangle CDB, tan 60 will be equal to h upon x. What is the value of tan 60? So from here, the value of h comes out to be root 3x. Now, this is the second equation. From the first equation, we have got the value of x as root 3 h minus 50, right? So what we can do, either we can put the value of x or the value of h. X is root 3 into, the value of x is root 3 into h minus 50. Is this clear, bachcho? If you put the value of h here, so what it will become? X is equal to root 3 into root 3x minus 50. You have used the equation 1 and 2 and putting the value of h from equation 2 in equation 1. Is this clear? अब इसको simplify किया बच्चों. X equal to 3x minus 50 root 3. Right? So take x on this side and minus 50 root 3 on this side. 3x minus x.
So we have got 2x equal to 50 root 3 and x will be equal to 25 root 3. on 2. That will be 25 root 3. Right? So x is the distance between the tower and the building. What else we are left with? Now we have to find h. What is h? Root 3 into x. What is the value of x? 25 root 3. So this becomes 25 into 3. 75. That is 75 meter. So height of the tower is 75 meter. And the distance between the tower and the building is 25 root 3 meters. Is it okay बच्चों? Have you understood the question? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. जस्ट आपको दो वेरिएबल से दोनों को एलिमिनेट, एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालनी है, राइट, एंड देन फर्स्ट की वैल्यू निकालनी है. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमने सबसे पहले किसको एलिमिनेट किया? एच को. एच को एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, देन वही एक्स की वैल्यू वापस पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच. अंडरस्टूड बच्चों? हाँ जी बच्चों, कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड. कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? जिनको नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड. सबको आ गया होगा. चलो बहुत अच्छी बात है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. Amit standing on a horizontal plane and a bird flying at a distance of 200 meters from him at an elevation of 30 degree. Right? अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको. ये स्टूडेंट है बेटा एक, लेट्स से दिस इज अमित. He is standing on a horizontal plane and a bird flying at a distance of 200 meters from him at an elevation of 30 degree. ये डिस्टेंस हो गया बेटा 200 मीटर and this is the elevation of. Is this clear? Is this much part clear बच्चों? Now Deepak standing on the roof of a 50-meter high building and the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Amit and Deepak are on opposite side of the bird. अब यहाँ पे देखिए डायग्राम ड्रॉ करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. This is the bird. Let's say this point is bird, right? A is the bird. So now here is Amit. Deepak will be on the opposite side, and he is standing on a 50-meter high building. From here, he observed the bird at an angle of 45 degree. Have you understood the diagram बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. Now what you have to find out in this? Find the distance of the bird from Deepak. Now here is Deepak. You have to find this distance, that is A, B, C, D, and this. You have to find this distance, that's it, AC. तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? Right? So now how will you do it? कैसे करेंगे बच्चों? Let's say this height is AB is H. AB is H. Let AB is H meter. Right? Then what will be the height of AE? What will be AE? Tell me बच्चों. H minus 50. हाँ जी. H minus. Is this clear जी? बस अब कर दीजिए जी दोनों.
राइट। सो सबसे पहले ट्रायंगल क्या लेंगे हम, ABO। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए बच्चों इसमें, Sir, height of the tower is given, hypotenuse is given, so we'll apply here sine sin 30 degree. Sin 30 degree is equal to AB upon, what is the value of sin 30? 1/2. एक ही स्टूडेंट की मुझे आवाज आती है, बाकी कोई नहीं बोलता तीनों सेक्शन से। Nobody is ready to answer the questions. वो दो स्टूडेंट बैठे हैं सेक्शन डी में, they are answering the each and every question. Whether I ask have you understood, तब भी उन्हीं की आवाज आती है, कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तब भी उन्हीं की आवाज आती है। बच्चे ये आप सब लोग भी हो यहाँ पे क्लास में, प्लीज मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। ठीक है, हम यहाँ पे कोई मतलब कथा नहीं कर रही है कि आपने बस सुन के और बाद में प्रसाद लेके जाना है। यू आर हेयर टू लर्न समथिंग। If you are understanding, that is also good. If you are not getting it, you should ask the question. So sin 30 की वैल्यू बचे 1/2. What is AB? Height of AB is h upon 200. So h क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बचे, h कितना आ गया, that is 100 मीटर। नाउ अब h की वैल्यू आ गई आपके पास, so you have the value of AE. What is the value of AE? 100 minus 50, that is 50 meter. Now since you have to find the value of AC, अब क्या करेंगे आप, एक और ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल AEC। तो इसके अंदर अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों, साइन कॉस टेन, क्या लगाएंगे इसमें, साइन साइन, साइन 45 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2 एंड द वैल्यू ऑफ AE हमने फाइंड आउट की है 50 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 50√2 मीटर। ये आपका आंसर आ गया है, सर्कल कर दिया मैंने आपको AC को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चों। ठीक है जी। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक एंड इट कम्स आउट टू बी 50√2 मीटर्स। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए जरा। बच्चे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने कुछ डिफरेंट कराए हैं। ठीक है, सम पीपल से कि बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट ये पिछले एग्जाम्स में आए हैं सारे क्वेश्चंस, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट करते हैं जी। नाउ अगेन ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज देयर। A group of students of class 10 visited India Gate on an education trip. हाँ जी बच्चों, एक क्लास के बच्चों ने इंडिया गेट विजिट किया। आप में से कितने लोगों ने इंडिया गेट विजिट किया हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड इंडिया गेट? वो एक ही बच्चा है बेचारा जो आंसर देता है, और वही यहाँ एक दो बस। आप में से ओनली 2-3 लोगों ने इंडिया गेट विजिट किया है। वेरी गुड, चलो यू मस्ट गो देयर, राइट। The teacher and student had interest in history as well. The teacher narrated that India Gate, official name Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, right? Monumental sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in wars fought between 1914 and 1919, right? So the teacher also said that the India Gate, which is located at the eastern end of Rajpath.
formerly called the Kingsway, is about 138 feet, that is 42 meters in height. Student Shreya of height 1 meter visited India Gate as a part of her study tour. Now we comes to the question, students. What is the angle of elevation if Shreya R की जगह is होना चाहिए is standing at a distance of 42 meter away from the monument? अब देखिए बच्चे, अब डायग्राम क्या बनेगा? This is Shreya of height 1 meter. Is this clear? And she is standing at a distance of 42 meter away from the monument. This distance is 42 meter. Height of India Gate is? What is the height of India Gate? 42 meters. 42 meters, right? So 1 meter जो हमने काफी बड़ा बना दिया, it has to be very small in comparison to, means she is observing from here, right? So what will be the angle of elevation this? 45 meters. हाँ जी बच्चों, height is also given, perpendicular and base are given. So let's say this is theta. So what is the relation between perpendicular and base? Tan theta कितना आ रहा है बच्चे? Perpendicular upon, it comes out to be 1. So tan theta is 1. So tan theta की वैल्यू 1 कब होती है? Tan 45 degree. So therefore theta is 45 degree. Is this clear? Any doubt बच्चों? Next question. They want to see the tower at an angle of 60 degree. So they want to know the distance where they should stand and hence find the distance. अब क्या करना है? They want to see कि ये जो इंडिया गेट है बच्चे, इसका जो एलिवेशन है वो that should be 60 degree. So earlier initial position is this. So they have to move this side or this side, left or right? बताइए बच्चे. एंगल 60 डिग्री करना है तो लेफ्ट आना पड़ेगा या राइट आना पड़ेगा जी? बच्चे देखिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना. तो 60 करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा. लेट्स से यहाँ पे आगे. सो दिस इज एंगल 60 डिग्री. हाइट तो हम चेंज नहीं कर सकते. सो वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, right? So find out this distance AB. हाँ जी बच्चों, कितना आ गया? 48. अभी देखिए ना, अब आपके पास tan 60 हो गया. आपको बेस निकालना है और हाइट गिवन है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेट्स से दिस इज x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? √3. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बच्चों. सो द वैल्यू ऑफ x इज 42 बाय √3. इसको रैशनलाइज कर दिया आगे, राइट? सो दिस कम्स आउट टू बी 42 √3 अपॉन 3. सो 3 से कैंसिल हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी 14 √3. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? 1.73. 1.73. अब इसकी कैलकुलेशन करके आंसर बताइए जी.
24.2. 24 पॉइंट आ रहा है कुछ Yes, sir. 173 24.22 आ रहा है जी राइट सो यहाँ पे गिवन है 24 सो दैट्स मीन ही हैज टेकन द वैल्यू एज 1.732 तो अगर आप 1.732 लेंगे सो दिस विल कम्स आउट टू बी 24.24 24 rather so 24th सेकंड का ए ऑप्शन आ जाएगा इज दिस क्लियर बच्चों and that is the nearest one any doubt in this No, sir. now what he says if the altitude of the sun is at 60 degree then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length 20 meter is now what he says एक वर्टिकल टावर है बच्चे सन की जो एंगल इज देयर दैट इज 60 डिग्री राइट एंगल ऑफ द sun is 60 degree if the altitude of sun is at 60 degree then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length shadow is this let's say this is the shadow this is of 20 meter we have to find the height of this tower please do this 20 under root 3. 20 under root 3 so let's say this is c tan 60 degree is equal to bc upon ab students root 3 bc we have to find out and this is so bc will be equal to 20 root 3 so again a option right bacho fourth question if the ratio of the length of rod and its shadow is 1:1 प्लीज कर दो सेम क्वेश्चन है बेटा ये भी अब ये एक रेडो ये एक रॉड है बच्चे और ये इसकी शेडो हो गई दोनों की रेशियो जो है 1:1 है तो यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ हाँ जी व्हाट यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 45 degree. 45 डिग्री बच्चे देखिए अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज x/x हो जाएगा विच इज 1 और tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे सो यहां से आ जाएगा थीटा इज 45 डिग्री कितने बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आए हैं प्लीज रेज योर हैंड क्योंकि मैंने अभी पूछ लेने हैं सबको समझ आ गए हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी फिफ्थ क्वेश्चन द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the object view is below the horizontal level is हाँ जी बच्चे when viewed below suppose आप लोग बैठे हैं जैसे आप बिल्कुल नीचे देख रहे हैं तो वो एंगल क्या होता है हॉरिजॉन्टल के साथ Angle of depression. जहां से आप नीचे एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल दिस एंगल इज नोन एज दिस इज लाइन ऑफ साइट right so this angle is angle of depression right bachcho can you hear me Yes, sir. right Yes. so that will be angle of depression that is c sixth question if Shreya observes the angle of elevation from her eye to the top of India Gate to be 60 degree then how far is she standing from the base of the India Gate अब वही आ गया देखो क्वेश्चन now this is India Gate की हाइट तो फिक्स है she is standing here and her eye is making an angle of elevation of 60 degree मतलब उसकी हाइट कितनी थी बेटा श्रेया की 1 मीटर so this angle is 60 degree
right? So now what you have to find out, how far is she standing? So आपको ये distance निकालना है AB. Now इंडिया गेट की हाइट 42 के प्लेस पे आप 41 लेंगे, because 1 meter is the height of the Shreya. So take this as 41 and apply the concept of tan 60. So what we have to find AB. बच्चों समझ में आया? देखिए अगर my height is taken into consideration, 1 meter is the height of Shreya. So उसकी I से लेके angle of elevation, समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर मैं अपने फिट से एंगल ऑफ एलिवेशन लूं तो डिफरेंट होगा, आई से लूं तो डिफरेंट होगा. नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फ्रॉम हर आईज, सो दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड. ठीक है, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री. सो tan 60 विल बी इक्वल टू 41 अपॉन AB. सो tan 60 इज √3. राइट, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया जी. AB विल बी इक्वल टू 41 अपॉन √3. दिस विल बी 41 √3 अपॉन 3. तो आप क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर दो 1732 से, राइट, और उसके बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए. तो अर्लियर इट वाज 24.24, सो नाउ इन दिस केस इट विल बी बिट स्मॉलर देन 24.24. हो जाएगी बच्चों कैलकुलेशन? ये तो कर लोगे ना? Yes, sir. नेक्स्ट तो कम्स टू द 7th क्वेश्चन. If the angle of elevation from Shreya's eye changes from 45 degree to 30 degree when she moves some distance back from the original position, find the distance she moves back. ठीक है जी, देखिए ये 42 मीटर है जी हर आइस. अच्छा, अगेन तो अब इसको 42 की जगह ना, अगेन यू हैव टू टेक, means let's say this angle was 45, now she has moved back, so आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना. कैन यू डू दिस? Yes, sir. करके बताइए जरा जी. ये सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम, सिचुएशन चेंज हो रही है ओनली. देखिए 7th का जो सेकंड पार्ट है वो भी एकदम मिलता जुलता ही है जी. और वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको एंगल निकालना है. देखिए व्हेन इट इज 30 डिग्री, सो नाउ दिस हाइट इज 41, राइट. लेट्स से दिस इज x, this is y. So for when you take tan 45, this is 41 by x, so this will be 1, so x comes out to be 41, right बच्चों? When you take 30 degree, when she moves back, so again 41 by y, tan 30 is from here, y comes out to be 41 √3. So difference कितना आ गया दोनों में? 41 √3 y minus x. So y minus x will be 41 √3 minus 41. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. अगर आप 3 minus 1. और वाला पार्ट देखोगे बेटा तो आपको ये वाला डिस्टेंस गिवन है, तो अगर ये डिस्टेंस है तो एंगल कितना था? 30 डिग्री. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारा मैचिंग था सारा क्वेश्चन, ये एक दूसरे के साथ सेम कॉन्सेप्ट था, बट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए क्वेश्चंस फॉर्म किए हुए थे डिफरेंटली, राइट बच्चों? So with this we come to the end of this topic, height and distances. If you have any doubts,
you can convey to your teachers and we can work accordingly then. Right, students? So thank you very much, students, for your patience listening. Thanks to all the teachers for your support and cooperation.